इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग के हवाले से। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि इस मेथड में हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं डीएनए का दैट कैन हेल्प अस टू गेट द डीएनए ऑफ डिफरेंट साइजेस which can later be sequenced and later be run on the gel and we can read out the sequence. जब enzymatic method of DNA sequencing जिसको डाइडिऑक्सी मेथड भी कहा जाता है उसकी डिस्कवरी के बाद डीएनए सीक्वेंस के ऊपर काम शुरू हुआ, केमिकल मेथड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ वॉल्टर गिलबर्ट की लेबोरेटरी में। Chemical method में what happens actually that DNA contains the nucleotide and nucleotides they contain sugar, phosphate and nitrogenous bases. Any kind of chemical which can remove or which can cause damage with the nucleotide and that space becomes empty, the nucleotide is removed. From that particular point there is likely a chance the DNA strand gets broken down. अब अगर इस थ्योरी को सामने रख के हम डीएनए का एक एंड लेबल कर दें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट से अल्फा P32 से, दैट विल मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डीएनए और उसके बाद डीएनए को सब्जेक्ट किया जाए डिफरेंट किस्म की केमिकल ट्रीटमेंट्स के साथ। ऑल द 4 न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन they can be removed from the DNA under different chemical treatments and different conditions. Ultimately, we can get 4 different mixtures. जैसा कि डाइडिऑक्सी मेथड में हमने बात की, हमें 4 डिफरेंट सेटअप्स करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, ताकि हमें आइडिया हो सके कौन सा डीएनए कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है स्ट्रैंड सिंथेसिस में। Similarly, in the chemical method, we have to set up 4 reactions. We have to treat all these 4 different reactions with different chemicals under different temperature or pH conditions, and we get to know that one tube have the breakage points at A, adenosine or guanosine or cytosine or thymine. Once this breakage of the DNA strand is done, then we do the same thing. We run the gel and after the gel electrophoresis we read out the nucleotide sequence again from bottom towards top and we make a sequence of the nucleotides on the strand. Chemical method जब discover किया गया तो it was not very efficient because जितने number of nucleotide which we could have sequenced was not so large. However, after its discovery it underwent the continuous series of refinement and improvements, and now it is possible that we can sequence a nucleotide sequence of like 200 to 400 nucleotides on the DNA strands. However, still there are some limitations and people working with the DNA sequencing don't prefer this method because of drawbacks. On drawbacks में the most important one is the involvement of toxic chemicals. जैसा कि हमने बात की केमिकल मेथड है, हमें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करना पड़ते हैं डीएनए को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्योंकि हमें इसका एंड को लेबल करना है, डीएनए स्ट्रैंड के एंड को लेबल करना है रेडियो एक्टिव फॉस्फेट के साथ। देन द सीक्वेंसिंग इज डन थ्रू जेल्स. देयर इज नो automatic sequencing possible yet. So that these are the situations which make this method non-preferential over the dideoxy method. अगर दोनों मेथड्स को कंपेयर किया जाए, सांगर्स मेथड को और मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड को या एंजाइमेटिक मेथड को और केमिकल मेथड को, then we see that सांगर्स मेथड में हमें डीएनए सिंथेसिस चाहिए, केमिकल मेथड में हमें DNA itself चाहिए. We don't synthesize the DNA in chemical method. Then Sanger's method में हमें termination of chain elongation चाहिए. Maximum Gilbert method में हमें DNA strand की breakage चाहिए. Sanger's method involves automatic system or automatic sequencing. Maximum Gilbert is still manual.
Then the starting material for Sanger's method is single-stranded DNA. For chemical method or Maxwell Gilbert method, we can use both double-stranded and single-stranded DNA.